हाँ जी, आई थिंक वी आर बैक नाउ. Am I clearly visible to others? बहुत सारे लोग चले गए, मैं देख रहा हूँ. So there is some issue in YouTube today. So हमारे बहुत सारे sessions basically इसी तरह से जा रहे हैं आज. So they got delayed. Yes, people at YouTube, Akshit Trivedi, Pinky Jaiswar, can you see me and hear me well? मतलब ऐप पे तो ठीक चल ही रहा है. I think the issue is at YouTube. Just confirm once. हाँ, ऐप पे तो सब कुछ ओके है. थैंक यू प्रेरणा, कोलेट, आयुष, कुणाल, साक्षी, सोनी. गुड इवनिंग अक्षित. सो सॉरी फॉर दिस डिले, बट दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड्स, है ना. तो ये आई मीन इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम. सो इट इज बैक नाउ, है ना. आई होप एवरीवन कैन सी मी नाउ. आई एम गुड अक्षित, थैंक यू. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन हम लोगों का एक बचा हुआ था कल से. तो कल मैंने आपको एज ए होम असाइनमेंट दिया था कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा. सो आई थॉट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट. हाय कुशल जैन, हाय पिंकी, गुड इवनिंग गाइस. विशाल, गुड इवनिंग, एंड अदर्स. हाय दीपक बेस्ट, थैंक यू, गुड टू गो. ओके, सो ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है. विच वॉज लेफ्ट. सो 29 कैन बी रिटन एज 26 प्लस 3. 26 इज डिविजिबल बाय 13. आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम यस्टरडे कि इसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये गायब हो जाता है. एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज 3 raised to the power 347. नाउ द पॉइंट इज 3 raised to the power 347 does not mean 3 is my answer. Of course, the power is also there. 347 is also there. तो वो पूरा सॉल्व करने के बाद ही बात बनेगी. Only then we'll get to know about this. ठीक है. Yes, अक्षित त्रिवेदी, वॉट एवर डाउट इज देयर, जस्ट पुट इट देयर, है ना. बताइए मुझे क्या आपका डाउट है. SS Nashier, my surname, very easy question. 3 raised to the power 347 divided by 13. This is what we are discussing now. How do we proceed with this? Again, I will look into the powers of 3 कि 13 का मल्टीपल कहां आता है. So 3 का स्क्वायर is 9. 9 plus 1 minus 1 should not be a multiple of 13. Should be a multiple of 13. नहीं मिलता. 3 cube is 27. 27 के आसपास. Is there a multiple of 13? Yes, 26 is there. So basically I want to write this as 3 cube to the power something. I think we did such a question yesterday as well. I want to write this as 3 cube to the power something. Okay? I want to write this as 3 cube to the power something. But to write that, the power must be divisible by 3. But 347 is not divisible by 3. So how do we proceed with that? आप 347 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, it will give you 115, but रिमाइंडर बच जाता है 2 का. So I will write this as 115 into a remainder of 2 would be written like this. This step was important. Is that clear to all of you? Please tell me fast. ये समझ पा रहे हैं आप सब लोग? At 3 cube we were getting a remainder of 1. So therefore I am saying कि इसको 3 cube की पावर कुछ करके लिख लेते हैं, and then 2 powers will be left because actually 347 जो होता है it is 3 into 115 plus 2 remainder भी है. So 3 into 115 तो will be used with this, but 2 remainder would be left along with that. So 3 square has to be written separately and 3 cube to the power 115 has to be written separately. I hope this is clear now, Deepak. Now this 3 cube which is 27 can be written as 26 plus 1 raised to the power 115. 3 square is 9. फिर से वही 13 से 26 डिविजिबल है, 0 बचेगा. प्लस 1 की पावर 115 is plus 1 and plus 1 into 9 is plus 9. So the final answer is equal to 9 only. The final answer is equal to 9. I hope this is clear to everyone. Akshit, you have a doubt, you can always post it here. बताइए मुझे क्या डाउट है, we will discuss that. So the previous question that we did, इस वाले में तो सीधा इसके मल्टीपल से एक ज्यादा था. This was 1 less than a multiple of it. This was directly the power was a multiple of 3. So I thought of taking other question in which what if the power is not a multiple of the number that you are looking for. हमें चाहिए था 3 cube to the power something. It was not a multiple of 3. So therefore I took it like this. Raj is saying take some other example. Okay Raj, I'll take another example. कुछ भी नंबर ले लेंगे.
What will be the answer of 3 mod 7? So अक्षित, ऐसे में नॉर्मली हम लोग 3 ही बोलते हैं आंसर. 3 mod 7 would be 3. ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं. लेट्स ट्राई दैट आउट. एक बार कोशिश करते हैं. सो द क्वेश्चन इज 36 raised to the power 1591 by 17. Do this, guys. What is the remainder? 36 raised to the power 1591 divided by 17. I am giving you 2 minutes to do this. All of you, please try this. 2 मिनट है आपके पास करने के लिए. रादर एक काम करता हूं, पूरे 2 मिनट देता हूं मैं आपको. ठीक है, सो ये रहा 1 2. So your time starts now. Do this. Kunal says 8, Pinky says 1. Eight, 1, 8, 9, 8. Okay. Time up. So Akshit says, by how did you get 3 that I didn't get? So Akshit, in the previous question probably you are talking about, usme we were looking for some power of 3 which will give us a multiple of 13 around it. तो वो 3 क्यूब में आ रहा था, थर्ड पावर में. So this is how we use 3. और वो पहला 3 आया था 29 को 13 से डिवाइड करके. 13 2 जा 26, तो उससे 3 बचा था. That was the case. So let's see what is the answer for this. I see that Kunal says 8, Bikash 1, Priyanshi 8, Manoj 8, 9, Colette says 8, Manisha 9, Sakshi 8, Ayush 2, Deepak Bisht says 4. Let's see what is the answer to this question. I'll do it pretty fast. 36 can be written as 34 plus 2. 34 plus 2 का मतलब ये है it is divisible by 17 जो part, so ये हो गया 0. So ultimately we are left with 2 raised to the power 1591 by 17. Now my job is to look into the powers of 2 where plus 1 or minus 1 is a multiple of 17. 2 की पावर्स में प्लस 1 और माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 17. अब 2 की पावर्स अगर आप देखें 2 स्क्वायर इज 4, उसके आसपास 17 नहीं है. 2 क्यूब इज 8, उसके आसपास 17 ही नहीं है. 2 to the power 4 is 16 and 16 is 17 minus 1. So I want to write this as 2 to the power 4 to the power something, because 2 की fourth power is going to give me 16, which is 17 minus 1. Now how would I write 2 raised to the power 4 to the power something? Power is not divisible by 4. So 1591 when divided by 4, what does it give you? इसको 4 से जरा डिवाइड करके देखो. If you divide it by 4, it gives you 4 3s are 12, 3 is left. 4 9s are 36, 3 is left. 4 7s are 28, remainder 3 is left. That means you can write this whole thing like this. 2 to the power 4 raised to the power 397.
2 cube divided by 17. Now this 2 raised to the power 4 can be written as 16 or 17 minus 1. 2 cube is 8. 17 से 17 is divisible. This is giving you 0. So minus 1 की odd power is minus 1. बगल में है 8. Minus 1 into 8 is minus 1, which is also equal to 9. So 9 is the correct answer. Manisha wrote precisely minus 8 or 9 is absolutely correct. Sampada got the right answer. Manoj got the right answer. ठीक है? So all these people got the right answer to this question. अक्षित, क्योंकि अगर 3 is lesser than 7, whenever a number is lesser than the other number, तो वही रिमाइंडर हो जाता है. What is the remainder when 7 is divided by 10? 7. 7 divided by 12? 7. 7 divided by 17? 7. So अगर नंबर छोटा है, that itself is the remainder straight away. Yes, is this clear to everyone? Can we move forward to the next part? अगर ये सबको समझ आ गया है तो मैं नेक्स्ट पोर्शन पे आऊं. For the first time. अच्छा, I didn't know this. So now it says Sampada for you. Always keep it with you. चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So now what am I going to discuss today? First of all, some binomial and remainders. Binomial नहीं, कुछ और है शायद, उसके बारे में बात करूंगा मैं. But yes, I will discuss those questions as well. कॉलेट पूछ रहे हैं कि उनका आंसर दे दीजिए जो आपने क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम. So I will discuss those questions today itself. ठीक है, I'll discuss about some of the properties और उसके बाद उन questions के बारे में भी बात करेंगे one by one. Okay जी. So first thing, this is a property which is quite useful from cat's perspective because cat is actually asking questions based upon this. They have asked. It is a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b if n is odd. A to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b if n is odd. And this property actually has been used a few times. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैट ने पूछे हैं. But before coming to the questions, I'll talk about why is this true. ठीक है, first I'll talk about why is this true. So I'll give you the explanation of this. Basically, a to the power n can also be written as a plus b minus b to the power n. Is that right? a को a plus b minus b भी लिख सकते हैं. It doesn't make a difference. Now you are trying to divide it by a plus b. If you are trying to divide it by a plus b, what will happen? a plus b से a plus b कट जाएगा. This will give you 0 remainder. What are we left with? We are left with minus b to the power n plus b to the power n. And now you yourself can see, अगर n odd है तो माइनस बी की पावर n का माइनस साइन साथ रह जाएगा. इट विल बी माइनस ऑफ b की पावर n. इट इज प्लस ऑफ b की पावर n एंड दे विल कैंसल आउट. इट विल बिकम 0. मतलब मान लीजिए पावर इज लाइक 5. सो माइनस बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 5. कैन आई से इट इज माइनस बी की पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5. दैट मींस इट इज इक्वल टू 0. हैड द पावर बीन इवन, तो ये बेसिकली हमारा b की पावर में माइनस का प्लस हो जाता. देन इट वुड नॉट हैव बीन 0. एंड देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर हो गया है ना. नो प्रॉब्लम गाइस हियर, एवरीथिंग इज ओके. बढ़ जाऊं आगे. नेक्स्ट, अनदर प्रॉपर्टी, a to the power n minus b to the power n. Now what about that? It is always divisible by a minus b. a minus b से तो ये हमेशा ही divisible है. And it is also divisible by a plus b if n is even. It is also divisible by a plus b if n is even. Yes, I will take some examples as well, अक्षित त्रिवेदी. ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे भी समझ में आएगा. What if we get power is negative? नहीं विशाल, that questions would not be there. मैंने बात की ना पिछली क्लास में भी, that we only talk about integers divided by integers. तो अगर नेगेटिव पावर होगी तो वो इंटीजर ही नहीं रहा ना. That would not be the case. So a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. a minus b से तो हमेशा ही divisible है.
and it is also divisible by a plus b if n is even. So this time n should be even. Here n was odd. Again, what is the reason? This is the reason. a to the power n minus b to the power n को मैं फिर से a को लिख सकता हूं a minus b plus b raised to the power n minus b to the power n. So can I say if I divided by a minus b, तो a minus b से a minus b कट जाएगा. What I am left with? b raised to the power n minus b raised to the power n. तो ये तो हमेशा ही divisible है without the value of n. I mean whatever is the value of n. So it is always divisible by a minus b by this logic, because a minus b से तो it is always divisible. If it is divisible by a minus b always, I can say this. आराम से लिख सकता हूं ना मैं ऐसा. तो I hope you are getting my point. Right? पीछे रह गया. Also, how is it divisible by a plus b if n is even? अब मैं उसके बारे में बात करता हूं. इसको हटा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए. Let us say I am dividing this whole thing by a plus b. अब अगर a plus b से डिवाइड कर रहे हो तो ये a plus b तो कट जाएगा. What are you left with? Minus b की पावर n minus b की पावर n, and this time this will become 0 if the power is even. क्योंकि पावर इवन होगी तभी तो माइनस का प्लस होगा और तभी तो आपके पास यहां पे 0 आएगा. So therefore we are saying it is divisible by a plus b too if n is even. इवन होगा तो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, और ऑड होगा तो सिर्फ और सिर्फ इवन होगा तो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, अदर a माइनस बी से इट इज ऑलवेज डिविजिबल. देयर हैव बीन क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. आई विल टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस नाउ. उनके बारे में बताता हूं मैं आपको किस तरह के क्वेश्चंस आए. लेट्स सी दीस क्वेश्चंस. अच्छा, उससे पहले एक और फॉर्मूला है, इस पे बेस भी कई बार कैट ने क्वेश्चंस पूछे हैं. सो दिस इज वन फॉर्मूला दैट यू माइट हैव सीन इन योर स्कूल टाइम एज वेल. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to this formula. So how is this formula used? ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक पिछला. इन दोनों पे बेस फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. This property is actually used this way that if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, this right hand side would be equal to 0. And if this right hand side is equal to 0, this left hand side is equal to 0, that means minus 3abc goes on the other side and you get a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Is that right? If a plus b plus c is equal to 0, that means if this portion is equal to 0, this whole thing would also become equal to 0, and that means a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is 0, or you can also say a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये मतलब ये वाली चीज आपको जनरली देखने को मिल जाएगी. वो नॉर्मली 3 क्यूब्स देगा आपको और उससे आइडिया मिल जाएगा. जैसे वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम वन ऑफ दीज एग्जाम्स इज दिस: 72 cube minus 55 cube minus 17 cube is divisible by which of the following? 72 cube minus 55 cube minus 17 cube is divisible by which of the following? And these are the options in front of you. Can you answer this using this property now? I hope you all can do it. अब आपने प्रॉपर्टी देख ही ली है, you know that which property is to be used. ट्राई कीजिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को. What is the answer for this question? Anyone having any answer? आयुष कह रहे हैं डी, कुणाल सेज डी, राज सेज डी, कुशल जैन सेज 216, केएन सेज ऑल, प्रेरणा सेज डी. Divisible of 6. Okay,
So basically if I use this property, how is it used here? 72 cube minus 55 cube can also be written as plus minus 55 का cube, minus 17 cube can also be written as plus minus 17 का cube. So isn't it a cube plus b cube plus c cube, and isn't a plus b plus c 0? सही कह रहा हूं ये बात मैं? Colette says D, Manoj says D, Vishal says D, so they all have got it now, I suppose. That this is a cube plus b cube plus c cube, and I see that a plus b plus c is equal to 0. Using this property, अगर a plus b plus c 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? It is equal to 3abc. So its value would be 3abc. The value of this function is 3abc. वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे. So now it is divisible by which of the following? ये says 51. Yes, it is divisible by 51. 17 है, 3 है, तो ये 51 से divisible है. 99, यहां 11 है 55 में और 72 में 9 है. So 11 into 9, it is also divisible by 99. 216, 72 into 3 is 216. It is also divisible by 216. So basically the answer is all of these, that this number is divisible by all of them. Because it is equal to 3abc, और ये 3abc आपका 17 से भी divisible है, 11 से भी, 9 से भी, 3 से भी, 8 से भी. It is divisible by any multiple of these numbers. I mean इनको दोनों में से किसी भी 2-3 को multiply करो, it is divisible by all of them. I hope this is clear to everyone. Anyone having a doubt here? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे, वरना मैं आगे बढ़ता हूं इससे. No doubts about it? मनोज says okay, विकास says clear. अभी छोटी सी प्रॉपर्टी है, जब भी क्यूब्स आएंगे you just have to pay attention to this. Nothing else is to be done. ठीक है? क्यूब्स के आते ही ध्यान देना इस बात पे कि क्यूब्स है, कुछ तो मतलब है उसका लेन देन से. चलिए जी, so let's move forward now. So now I am asking you two questions based upon that property that we did before this. I told you कि कुछ questions CAT में आए हैं. I have taken both the questions from CAT here. ठीक है? Let's try to answer them. First question. What is the answer to this question? 15 to the power 23 plus 23 to the power 23 is divided by 19. What is the remainder? Just use those properties, you will get the answer for this question. It's an actual CAT question. 15 की पावर 23 plus 23 की पावर 23 is divided by 19. What is the remainder? हाँ जी. सो सोनी से 0, कुणाल 0, राज 0, साक्षी, आयुष, मनोज, विकास, संपदा, मनीष, विशाल, एवरीवन से 0. बगल के विशाल कह रहे हैं बिग 0, छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी सी 0. ओके. अक्षित त्रिवेदी ऑल्सो से 0. ठीक है जी, 0 is the right answer. Why? It is the same property. A raised to the power n plus b raised to the power n is divisible by a plus b if n is odd. इसी का तो यूज हो रहा है इसमें. So basically here I can say
a की पावर n मतलब 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23, n इज ऑड आपका, ये देखिए ऑड नंबर है, सो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 15 प्लस 23 दैट इज 38, और अगर नंबर 38 से डिविजिबल है तो 19 से तो होगा ही होगा, सो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय दिस एंड हेंस योर आंसर इज 0. This number is divisible by 19 and hence the answer is 0. Another one, another cat question. Try to answer this as well. So Colette says 0, Deepak says 2, Vishal 0, Vikas 0, Raj 0, Kunal 0, again Ayush 0, Prerna 0, Sakshi 0. Everyone is saying 0. Divya says 0. So yes, again 0 is the correct answer. Reason. Now how do we use it? See, he is asking you to divide by 70. Though these all add up to 70, but see, I did not say that this is extended, can be extended to any number of numbers. I did not say that a की power n plus b की power n plus c की power n plus c की power n is divisible by a plus b plus c plus d if n is odd. ये तो मैंने नहीं बोला था, ठीक है? तो ये चारों पे एक्सटेंडेबल है ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा. So how come it is 0 here? So kn is also saying कि यही लॉजिक लग रहा है, सबका सम 70 है. No, this is not the logic. तो ध्यान से देखिएगा, आंसर 0 है, बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस. एक्चुअली 16 क्यूब प्लस 19 क्यूब, कैन आई से इट इज डिविजिबल बाय 35? इट इज डिविजिबल बाय 35. ऑल्सो 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब, कैन आई से इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 35? So this is divisible by 35, this is divisible by 35, so their sum would also be divisible by 35. Their sum will also be divisible by 35. Also, this number is even, odd, even, odd. दो even दो odd अगर ऐड करोगे तो वो even आएगा. That means it is also divisible by 2. So because it is divisible by 35, it is also divisible by 2. Hence I can say my answer is equal to 0, क्योंकि ये 35 से भी divisible है, ये 2 से भी divisible है. This means it is also divisible by 70. So therefore the answer is 0 for this. I hope all of you got it. Mushahid Khan, you got 0. KN, you got 0. Akshit got 0. The point is, do not use this. ये ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए. Not 1 into 4, 2 into 3 necessarily, राज, वो डिपेंड करता है हमसे जो पूछा गया है, तो उसमें कोई कॉमन मल्टीपल शुड बी फॉर्म्ड. सो आई सॉ 16 and 19, 17 and 18, they are making a common multiple. If I take 16 plus 17 cube, it is divisible by 33. 18 plus 19, it is divisible by 37. But 33 और 37 are not giving me my result ना. मुझे तो रिजल्ट 70 से चाहिए. सो आई नीड सम मल्टी फैक्टर ऑफ 70 ओनली, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय 16 and 19 and 17 and 18, उनका यूज करके. ओके, so I hope all of you got this. So now I am coming to those questions that I gave you as a home assignment. This was the first question I gave you. Anyone having any answer for this question? ये मैंने आपको कल दिया था एज ए होम असाइनमेंट. किसी का आंसर आया? 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 22. ओ वैसे तो ये मैंने गलती से लिख दिया, इट वॉज 2222. पता नहीं वो कहां चला गया. इट इज 2222.
दो आई थिंक इट वॉन्ट मेक ए डिफरेंस, द आंसर वुड बी द सेम इन बोथ द केसेस। नहीं, आंसर भी सेम नहीं, आंसर बदल जाएगा, ठीक है, आंसर वुड बी चेंज्ड। सो दिस वाज एक्चुअली आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जाम्स में वो एक्चुअली 4444 की पावर 3333 था प्लस 3333 की पावर 4444 था, दैट वाज द क्वेश्चन। सो सिमिलर काइंड है, खैर दोनों ये मतलब तो कॉन्सेप्ट से फर्क पड़ता है हम लोगों को। सो इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 7 आई विल डिवाइड देम सेपरेटली, ओके। नो कोलेट 9 तो आंसर हो ही नहीं सकता। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 7 हाउ कैन द आंसर बी 9? आई टोल्ड यू डिवाइजर से बड़ा तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी इवन इक्वल टू डिवाइजर। इफ इट इज 9 you have to further divide 9 by 7 and give the answer as 2. 9 cannot be the answer, ठीक। खैर इसको करते हैं हम लोग, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले I'll divide 2 2 2 2 7 3 जा 21 और बचा 1, 7 1 जा 7 बचा 5 और 49। सो बेसिकली 2219 प्लस 3 की पावर 5555। आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस इसको 7 से करो तो ये आ जाता है 7 7 जा 49, 6 9 जा 63, 2 ये 5, तो 5551 प्लस 4 की पावर 2222 डिवाइडेड बाय 7। सो व्हाट डिड आई राइट हियर, बेसिकली ये मैं कहां से लेके आया, +3 +4 इसमें से निकाल के, दैट 2219 इज डिविजिबल बाय 7, 5551 इज डिविजिबल बाय 7। आई ट्राइड डिवाइडिंग 2222 बाय 7 तो मैंने देखा 2219 डिविजिबल आ रहा था। आई ट्राइड डिवाइडिंग बाय 5555 तो आई सॉ 5551 डिविजिबल आ रहा था। तो जनरली वंस यू स्टार्ट डूइंग इट तो आप ये लिखोगे नहीं, you will straight away write that this is giving you a 0, this is giving you a 0. So why don't I straight away write 3 की पावर 5555 plus 4 की पावर 2222? Isn't it? Can't I straight away write like this? कि 3 की पावर 5555 is the number and 4 की पावर 2222 is this number. Now 7 के लिए what do we do? First of all, can I write this as 3 to the power 5 to the power 1111 plus 4 to the power 2 to the power 1111 divided by 7? लिख सकता हूं ना ऐसा? 5555 में से 5 अंदर कर लिया तो ये बचा और इसमें से 2 अंदर कर लिया तो ये बचा। नाउ इट हैज बिकम ऑफ द टाइप a की पावर n प्लस b की पावर n and your n is odd. Your n is 1111 which is odd in both the cases. So can I say it should be divisible by a plus b? This should be divisible by a plus b now. And what is a plus b? A plus b is 3 की power 5 plus 4 square which is 259. So this whole number is divisible by 259 और 259 खुद ही 7 से डिविजिबल है। So if this number is divisible by 259 and 259 is divisible by 7, so can't I say the remainder is finally 0 in this case? 259 is divisible by 7 and this whole number is also divisible by 7, hence our final answer is equal to 0. So 0 is the right answer. Is this clear guys? कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज फटाफट बताइए इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आई विल टॉक अबाउट द आंसर्स ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस। आई एम नॉट गोइंग टू डू द कंप्लीट सॉल्यूशन, आंसर जरूर डिस्कस करेंगे उसके। What if 5555 having the power of only 22? कुशल जैन, the question would be slightly difficult, though that can also be done. उसमें फिर हम वही करते जो हमने आज किया था। 5555 की पावर 22 by 7 है, 5555 डिवाइड किया 4 आ गया, it becomes 4 की पावर 22. I will look into the powers of 4, that which power of 4 gives me a multiple of 7 around it. तो 4 का स्क्वायर 16 के आसपास देयर इज नो मल्टीपल ऑफ 7। 4 का क्यूब इज 64 के पास 63 है ना, ठीक है। सो आई विल राइट दिस एज 4 क्यूब टू द पावर समथिंग। अब ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, बट 3 7 जा 21, एक पावर और बचेगी, आई वुड राइट इट लाइक दिस। सो 4 क्यूब इज 64 का बन गया 63 प्लस 1,
की पावर 7 इंटू 4/7, तो ये डिविजिबल है. 1 की पावर 7 इज 1 इंटू 4, सो द फाइनल रिमाइंडर फ्रॉम दिस वुड बी इक्वल टू 4. बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी कर लेंगे हम लोग सॉल्व. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा और उसका भी रिमाइंडर आ जाएगा. दोनों को ऐड करके ध्यान रखना, द आंसर शुड नॉट बी मोर देन 7. ज्यादा होने लगे दोबारा डिवाइड करके फाइंड द रिमाइंडर. Sakshi, in the last step what did we do? It was becoming a to the power n plus b to the power n. अब a to the power n plus b to the power n is always divisible by a plus b because here the power is odd. So it is divisible by a plus b, that is 259. A is 3 to the power 5, 243. B is 4 square, 16. 243 plus 16 is 259. अब ये 259 खुद ही 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है. 0 इज द रिमाइंडर. ठीक है जी. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था. 32 raised to the power 32 raised to the power 32 is divided by 9. So what is the remainder? Let's talk about this. First of all, 32 can be written as 27 plus 5 की पावर 32 की पावर 32 divided by 9. 9 से 27 divisible है, it becomes 0. So ultimately it is 5 की पावर 32 की पावर 32 divided by 9. Right? Now 5 की which power is giving me a remainder? I mean a multiple of 9 close to it. 5 का square 25. Is there a multiple of 9 close to it? No. 5 का cube 125. Is there a multiple of 9 close to it? Yes, 126. 5 cube is 125, right? 5 cube is 125, which is 126 minus 1, and 126 is a multiple of 9. So again I have to write this as 5 cube to the power something. ठीक है, बट ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं. What is the power? 32 to the power 32. Now it is not a multiple of 3. If it is not a multiple of 3, how much remainder does it give by 3? वो मैं अलग से लिख दूंगा यहां पे remainder. But I don't know what is the remainder it is going to give me. So I will do one thing. 32 की पावर 32 को 3 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं. It is 33 minus 1 की पावर 32 divided by 3. ये डिविजिबल है 0. Minus 1 की पावर 32 का मतलब है 1. So this power when divided by 3 gives you a remainder of 1. So therefore I would write 1 over here. What will come here we don't know. ये नहीं पता हम लोगों को, लेकिन इतना पक्का पता है कि यहां पे 1 आएगा. ये बात समझ आई आप सबको? Kn says 25 or 27 near है. No Kn. When I say near, near means either plus 1 or minus 1. So 25 के आसपास नहीं आ रहा था. 125 के नजदीक is 126, which is just plus 1 or minus 1. So therefore we go for that. So now I am saying that 30 to the power 32 divided by 3 gives a remainder of 1, or you can also say 32 की power 32 is a multiple of 3 plus 1. भाई 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3k plus 1. सो आई कैन राइट दिस एज 5 क्यूब टू दी पावर k इंटू 5 टू दी पावर 1. मनोज हाँ कर सकते हैं. 32 की पावर 32 को यू कैन राइट 2 की पावर 160. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. आई मीन इसकी जगह पे यू कैन राइट 2 की पावर 160. नथिंग रॉन्ग विद दैट. फॉर श्योर यू कैन डू दैट. Okay जी. So now we are dividing it by 9. 5 cube is 125, which is 126 minus 1 raised to the power k into 5 divided by 9. ये divisible है, बचा 0. And we are left with minus 1 की power k into 5. Now what will be my final answer is dependent upon k. And can any one of you tell me what is k? Even or odd? क्योंकि मुझे तो यही जानना ना even है कि odd है. Anyone tell me the reason. How do you get to know कि k even है या odd? फटाफट बताइए. Any one of you, is k even or odd? You have to tell me now. What is k? Even number or an odd number? Deepak says it is even. Okay. And why Deepak?
Kushal Jain says even. Colette, K is odd, so total power is even. Very good, Colette. Vishal says odd. Very good, Vishal. Ayush says odd. Very good. Good, good, good. Odd is correct. Why odd? Because ये odd होगा तभी तो total even बनेगा. 32 to the power 32 is an even number. 3 into odd, तो odd बनेगा. odd plus 1 ही तो even आ पाएगा. If k is an even number, 3 into even is even. How can even plus 1 be even? Even plus 1 तो फिर even हो ही ना पाता. So therefore k is surely an odd number. If k is surely odd, that means it is minus 1 into 5 minus 5, और 9 से अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है, it is equivalent to plus 4. So 4 is the right answer. It is odd because we divided by 3. No, K. Not only because we divided by 3. This is the reason that we just discussed about. That why k is odd. So I hope you got the answer. I know that I'm going a bit fast, but this was your home assignment. This was supposed to be done by you. I'm just discussing it once so that you can get the answer. Still, if you have a problem, you can always go through it again. मतलब ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ही है, यू गेट दीज रिकॉर्डिंग्स विद यू, ऑलवेज यू कैन play them again. Why multiply by 5? Because one power was left, Manoj, here. 32 to the power 32 when divided by 3, it gave us a remainder of 1. So 5 की power 3 के अलग हो गया, 5 की power 1 तो अलग बचेगा ना. Because of that we took one power separately. ठीक है जी, very quickly we'll do the last question on this, जो एक last assignment का question था. 40 की power 32 is divided by 17. So what is the remainder? Let's do that pretty fast. 40 की power 32 divided by 17. First of all, 40 can be written as 34 plus 6 की power 32 divided by 17. 17 से 34 निकल गया. We are left with 6 की power 32 divided by 17. Now we always look for a multiple of this number plus 1 or minus 1. Check. 6 square is 36. Is there a multiple of 17 around it? No. 6 cube is 216. Is there a multiple of 17 around it? No. 6 की power 4 we don't even know. ठीक है, 1296 होता है, लेकिन कई बार नहीं पता होता. ऐसे केसेस में it is not necessary you figure out plus 1 minus 1. You can do one more thing. 6 square you calculated, that was 36. 17 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 तो नहीं था, बट प्लस माइनस 2 में तो था. सो व्हाट इफ आई राइट दिस एज 6 स्क्वायर टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 17. दिस इज 36 एंड दिस 36 कैन बी रिटन एज 34 प्लस 2. इससे क्या होगा? द नंबर वुड बिकम नाउ 2 raised to the power 16 divided by 17. This is not a difficult task. 2 की पावर्स मुझे 10 तक आती हैं. 6 की पावर्स probably I don't know even after a cube. I know 6 square, I know 6 cube, उसके बाद की नहीं आती हैं. That is the problem. Whereas 2 की पावर्स तो मैं बहुत दूर तक कैलकुलेट कर पाऊंगा. So therefore whenever you can even reduce it, just reduce it. So now 2 की कौन सी पावर में 17 आता है? 4th पावर में 16 आता है ना. So I can write this as 2 raised to the power 4 raised to the power 4 by 17. 16, that is 17 minus 1 raised to the power 4 by 17. 17 से 17 divisible है, and we are left with minus 1 raised to the power 4, which is 1. So the final answer for this third question is equal to 1. I hope you got it. If you didn't get it, you can watch it again on the recorded format. मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड तेज किया है फटाफट करने के लिए. I didn't want to go exceed the time limit, though we have already done that. But still, it is done. ठीक. Now in tomorrow's class, what are we going to do? I'll be discussing about quotient theorem completely. That's a theorem which is extremely important. You can make all these questions look very easy, very easy. Any question of remainders can be made easy using that theorem, which we are going to discuss tomorrow. ठीक है जी, तो कल हम दोबारा मिलने वाले हैं. आई होप टू सी यू ऑल अगेन. प्लीज कीप डूइंग दीज थिंग्स. यू आर नॉट डूइंग दिस, आई सी दैट, क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना. बहुत सारे लोग मुझे दिखते नहीं है, वही कॉमन लोग दिखते हैं जिनसे हम लोग हर बार मिलते हैं. सो प्लीज विल मीट टुमारो अगेन. नो होमवर्क टुडे अक्षित, आज के लिए होमवर्क नहीं है. कल मैं आपको होमवर्क दूंगा विद द क्वोशिएंट थ्योरम.
And again, as I talk to you about this Gradeup super subscription all the time, ठीक है? So सब कुछ free session सही है, लेकिन पैसा हमें भी कमाना है. So please ask people to join Gradeup, guys. So we have a super subscription as well, in which wherever you go, basically everything would be covered in about MBA entrance examination into this super subscription, right? And if you take any particular course, obviously you can get these things. And it includes GD, VAT, PI preparation. That means after the exam too. These are the 4 durations of super subscription that you can always go for. Okay, and this is our brilliant faculty team, guys. So you can see all the people are extremely experienced and good enough in their topics. So that's all from my side. I hope you like this session again, guys. And thank you for showing this love. Please share it as well with the other people, so that I have more people watching these sessions. So that's all. कल फिर से मिलेंगे with the next session on Totient theorem. Till then, bye bye. Good night, everyone.